Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. I'm just going to uh, program structure within struct within struct that we discussed today during our class, and hopefully this would help you out how to program structure within structure. So let's start with this simple example. Here we'll define. I'll take the same example. We'll define a structure, a struct person, and this is outside the main program, and here we have defined a struct person with uh, with the default constructor here, and this default constructor, as you can see, that it's without arguments, so therefore this is a default constructor along with the program function which is called print, which prints these values that that are present within this struct person. Okay, so let's just create an instance of the main program in the main program and just run this very simple code. So this is what is happening. So this is the main program that you have here, and what we have done here is here we have defined an instance of person Shahid, and we are printing what what we have at present in Shahid. So let's see that what happens here. Okay, let me just build and run this. Okay, so you can see here in this part of the screen that a year is being printed, month, date, and name has been printed, and these are the same values that have been present in the default constructor. Let's make things a little bit more complex. Now, as we discussed in the class, I'll define a new struct by the name of my date, and this would basically be generating dates. Okay, so just to save time, I've already coded this part, and I'll just add this before the previous struct that I've got. So this is the struct my date. My date contains year, date, and month. And here we have the default constructor for my date, this part. And then we have got the parameterized constructor here, right, for my date. And then finally, we have a function which is called print here. Here it actually ends. Okay, so we'll have to modify our the present constructor struct person in order to use this newly defined uh, date, my date construct. So this is what the 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 person construct would look like. So here the person construct actually starts. At this line, what we have done is that we have created an instance of my date, DOB, which is representing date of birth, string name. So person has got an instance of struct along with the name. This part here is representing the default constructor for person. And this is representing the parameterized constructor for person. So you can see here that within this parameterized constructor for person, we are updating the values of year, date, and month, right, along with the value of the name as well. So the parameterized constructor is passed arguments PQRX. PQR represent the three components of date, and X represents the name. And then we can write a function which prints the parameters associated with this struct person. So date of birth is printed here,
by calling this. So dob is an instance that has been created of my date. So dob.print will call the print function for my date, which is this print function. This will be called first and this will be printed, and then the name will be printed separately. Okay. So this is what this person construct will look like. So जो पहले वाला मैंने define किया हुआ था, I'll just remove that part and I'll replace it with the new one. Right. So this is what I've done in the main program. Let's just see that what happens now. So अगर मैं person शाहिद define करता हूँ और शाहिद डॉट प्रिंट करता हूँ, तो लेट्स सी क्या होगा. ठीक है, तो इस केस में इफ आई रन दिस कोड, okay, so you can see the default constructor for both these structs have been called. ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें कोई आर्गुमेंट इस तरह से पास नहीं किया. अब मैं एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करता हूँ ऑफ पर्सन. So let me just write here call parameterized construction. So Raza is another instance of person, और इसमें parameterized constructor for person will be called, जिसमें पहले 3 arguments date को represent करेंगे और आखिरी argument name को represent करेंगे. And then I can like call this print print function Raza dot print, and I'll just call this and let's see that what happens. Now let's compile this, and here you can see okay, year is 2000, month is 4, and day is 1, and name is Raza. Right? So this is how you can actually define an instance and assign the name of assign the new date of birth for every instance. Achha, because my date is a separate construct, so what I can do is that I can also directly call my date from the main program. Right? My date from the main program can also be called. So क्योंकि वो struct अलग से है, so it's being called in person as well, लेकिन independently भी वो struct है ना, तो इसलिए मैं उसको independently भी main में call कर सकता हूँ. ठीक है, so this is my date. End date is the new instance of date that I have created, और अब उसमें मैं ये values pass on कर रहा हूँ 2001 1 1, और end date को मैं फिर print कर रहा हूँ. और अगर मैं end date को अगर मैं अब इसको इस कोड को रन करता हूँ, तो यू जस्ट लुक एट द लास्ट फ्यू लाइंस जो कि इसके थ्रू रन होंगी. सो यू कैन सी कि द लास्ट 3 लाइंस यहाँ पे जो है ना, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एंड डेट वैल्यूज. राइट, एंड डेट वैल्यूज रिप्रेजेंट. अच्छा, और अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते, से फॉर एग्जांपल रजा के लिए, और मैं मेन कोड से रजा के डेट को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो इन दैट केस what I can do is, let's say रजा या शाहिद किसी की भी, तो I'll have to write down, let's say शाहिद is the instance जिसकी डेट को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और डेट को चेंज करना है because date is part of dob is part of my date construct. So I'll actually have to dob के instance शाहिद है, और उसमें एक डेट इंस्टेंस क्रिएट हुआ है विच इज dob, और उसमें मैं ईयर को चेंज करना चाह रहा हूँ. सो अगर मैं अब ईयर को चेंज करके 1996 कर देता हूँ. ठीक है, और अब अगर मैं शाहिद को प्रिंट करता हूँ, राइट, नाउ लेट्स सी, यू लुक, सो यू विल फोकस ऑन द लास्ट फ्यू लाइंस जो कि आउटकम में आती हैं. Just look at the last few lines. Look at outcome. Okay.
यू कैन सी कि ईयर जो है ना वो 1996 हो गया. सो बाय यूजिंग दिस टू डॉट नोटेशन कि आपने पहले इंस्टेंस देखा कि जिसकी आपने डेट चेंज करनी है, फिर डेट के इंस्टेंस को आपने उससे रिलेट किया और फिर उस वेरिएबल को रिलेट किया. तो वेरिएबल आप बता रहे हैं कि ये कौन से ईयर की आप बात कर रहे हैं, वो ईयर की बात कर रहे हैं जो कि इंस्टेंस डीओबी में पड़ा है. और ये इंस्टेंस डीओबी रजा के साथ रिलेटेड नहीं है बल्कि शाहिद के साथ रिलेटेड है. तो अब अगर मैं रजा डॉट प्रिंट करूंगा तो वो वही पुराने वाली वैल्यूज जो है ना वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे. So I can also like do it like this. तो मैं रजा को भी कॉल करके उसमें भी डेट को चेंज कर सकता हूँ और इसमें मैं डेट चेंज कर देता हूँ. लेट्स से 1996 ये अगर मैं रखता हूँ. तो लेट मी जस्ट रन दिस एंड सी हाउ विल दिस प्रोग्राम नाउ रन. ओके, सो यू कैन सी कि रजा की भी डेट अब चेंज होगी. सो फ्रॉम द मेन प्रोग्राम यू कैन ऑल्सो like update this. Right. I hope this very simple small video would help you understand the struct within struct जो है ना वो आपने कैसे कॉल करना. There could be many different ways of like doing it, but this is probably the most simplest way of doing it. I would suggest कि आप इसकी कुछ practice जरूर करें. ठीक है. I'll share the .cpp file as well on और या आप यहाँ से इसको देख के आप खुद अगर कोड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है. यू कैन स्टॉप द वीडियो, राइट डाउन सुब्लाइम के अंदर आप अपना ये कोड रीराइट करके ट्राई आउट वेरियस थिंग्स. ठीक है. एंड देन सी के व्हाट हैपेंस. राइट. ओके, थैंक यू वेरी मच.